now we are going to start with section 3 onwards. Sir, can That you is zoom in a bit more so that it is more visible what is written? It is very like small right now. is it better now? Yes, sir, now it is visible. As per section 3 of CGLRC, there shall be a board of revenue of Chhattisgarh which is gonna have a president and the members. How many members shall be there? It is not fixed. It shall be decided by the state government. So what you have to remember here thoroughly, that whenever we are talking about constitution of board of revenue, there shall be a president. Except the president, how many members shall be there? What gonna be the conditions of those members? Where will be the sitting of those members? What gonna be the conditions of service of those members? Everything shall be decided by the state government. So technically, you can say that in this whole chapter, the constitution of board, principal seat of the board, conditions of service and of members of the board, and any other provision. Okay, everything shall be like their salaries, allowances, jurisdiction, power of superintendence. Everything shall be decided by the state government because it's a state act. Now, section 3 is clear to all of you, I think. There shall be a board of revenue for Chhattisgarh, having a president and some members as decided by the state government. Heading next. Yes, sir. Principal seat and other places of sitting of board of revenue. The principal seat of board of revenue shall be at such place as notified by the state government. They are not stating kahan pe hoga, Raipur, Naya Raipur, Bilaspur, Bhela, wherever the state government will notify, right? Now, there is a special power given to this board that notwithstanding where the state government has decided the principal sitting of this board, if they think for the convenience of people, for the wellness of people, or for the wellness of parties, or for adjudication, smooth functioning of adjudication, they want to shift temporarily, they want to shift the sitting at another place, then this can also be done. Like, let's assume that the state government notified that this board of revenues principal bench shall sit at Raipur. Now they think that for the convenience of parties in a particular matter, it's better to address the case in Bilaspur. Then the board of revenue, okay, bench sitting can be done at Bilaspur as well. Is it clear? Section 3 and 4 clear? Yes or no? Yes? Yes, sir. Check. Heading towards next, section 5. Conditions of service of members of board. Whenever, okay, any member is by the reason of absence or otherwise unable to perform the duty of his office, the state government may, by notification, appoint any person to be for the time being a member of the board. So here what they are stating that state government, in case if a member is absent or a member is not well or due to any reason he is not fit to sit on the position, then the state government can temporarily appoint some other person to sit on his place. Okay, except as expressly provided by this board, the terms of the service of the president and member of the board shall be such as may be prescribed by the terms and conditions laid down by the state government for the president and members of existing board shall continue in force until modified or superseded under this section. Now, what does it mean?
इसको समझने के लिए, सेकंड क्लॉज को समझने के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड थर्ड पॉइंट. To understand second point, firstly we have to understand third point, and if you will get idea about third point, you will be able to understand the second point as well. What they are stating: a person shall not be qualified to be appointed as a member of board unless he is eligible for the appointment as a judge of high. So who can be a member? Either he is capable of being a judge in high court, or who has served at least for 5 years as an office not lower in the rank that of collector, as a revenue officer, if he has served for 5 years or more as a collector. So basically there are two conditions. Either one of them has to be fulfilled. Either he should be capable or qualified to be appointed as a high court judge, or he has served as a revenue officer and as a collector for 5 years or more. Now coming back to the second point. Second point, what they are trying to convey, that the condition imposed in third point, that condition cannot be set aside by the state government when they are temporarily appointing someone as a member of board. So let's assume that the state government wants to appoint a lawyer who is having litigating experience of 3 years as a member of this board. Then the state government cannot do it until and unless that provision has been completely modified or superseded. Unless the provision of the section has not been changed, state government cannot appoint a lawyer who is having litigating experience of 3 years as a member of this board, or a collector who has served just for 2 years or 3 years or 4 years to be the member of this board, because they are not fulfilling the criteria of either to be elected as a judge of high court, or who has served as 5 years as a collector and revenue officer. Is it clear? Section 5 is clear, yes or no? Yes, sir. Now, section 6. What shall be the salaries and allowances? The state government shall be, there shall be, they shall be paid to the member of the board such salaries and allowance as the state government may determine, and those salaries and allowance shall be charged on the consolidated fund of the state. As we all know that consolidated funds are available with each and every state. So the same is the case with the state of Chhattisgarh, right? So the salaries and allowance of the members of this board of revenue, like the president and members of board of revenue, their salaries and allowances shall be paid from the consolidated fund. And how much will be the salary and allowance as decided by the state government. Now, heading next, talking about jurisdiction of the board. The board shall exercise the powers and discharge the functions conferred upon it by under this code, and such functions of the state government as may be specified by notification by the state government in that behalf, or and such functions as have been conferred by or under any central or state act or chief revenue authority or chief revenue or chief controlling revenue authority. So whatever liabilities have been given, okay, to the chief revenue controlling authority or chief revenue authority, all those functions shall be discharged in Chhattisgarh by Board of Revenue, right? As per section 7, whatever liability has been given by either by the state legislation or by the central act, right? Whatever liabilities have been given to whom? To either CRA or CCRA, that is Chief Revenue Authority, Chief Controlling Revenue Authority. These liabilities shall be performed by who? By Board of Revenue. The state government may, subject to such conditions as may deem fit, to impose by notification, confer upon or entrust the board or any member of the board additional power or functions assigned by the state government or under any enactment for the time being in force.
So if the state government want, the state government can provide any additional duty to the board of revenue along with these two. Which two? चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी एंड चीफ रेवेन्यू कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये जो दो अथॉरिटीज हैं, इनके काम को तो ऑलवेज इट शैल बी डन बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, right? But if the state government want, it can give some additional liabilities. Now next, power of superintendence of board. The board shall, in respect of all matters subject to its appellate or revisional jurisdiction, have superintendence over all authority in so far as such authority deals with such matter and may call for return. So the decision of board of revenue is final. ठीक है, whatever it has been decided as a appellate authority or as a revisional authority, ठीक है, whatever has been decided by board of revenue, that decision is final and no appeal shall lie in any court against the order passed by board of revenue. What you can do, if you are not satisfied with the decision of board of revenue, you can file a revision application, ठीक है, in front of board of revenue itself. Is it clear? Yes or no? Yes. Yes, sir. Section 8 is clear. Now next is section 9, exercise of jurisdiction by single members and bench. Okay, the board may make rules for the exercise of powers and functions of board by benches constituted of one or more members thereof, and all the decision given by such bench in exercise of such power or function shall be deemed to be the decision of the board. So let's assume that the board is having in total 15 members. ठीक है, and if any case has been decided by a single judge bench or by 2, 3, 4, 5, 10 members of that board or by the president and 5 members of the board, and whatever decision passed by that board, it's on the bench or by the bench or single judge bench, that decision shall be considered as decision of board of revenue, right? And it is not going to affect directly or indirectly the decision of board of revenue just because it has been passed by a single judge bench, right? Now cases pending at the commencement of this code, whatever cases pending at the commencement of this code, how they gonna be dealt? All appeals application for revision, review or other proceeding under the code pending before the Board of Revenue of Chhattisgarh relating to the state of Chhattisgarh on 31st October 2002 shall be transferred to and shall be heard and decided by Board of Revenue of Chhattisgarh. So whatever appeals, decisions, they are pending. Okay, whatever cases are pending, they shall be heard and decided by Board of Revenue. From which date? It is having retrospective effect. This provision has retrospective effect, right? And from 31st October 2002, whatever cases are pending, okay, in any court, they shall be heard and decided by Board of Revenue of Chhattisgarh. Now, in all cases, first appeal against the order of collector, whether exercising the power of collector or settlement officer during the currency of settlement pending before the board. Now, in all the cases where first appeal against the order of collector, whether exercising the power of collector or settlement officer during the currency of the settlement pending before the board, that case shall be heard and decided by Board of Revenue. Which case? जहां पे कलेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट आपने कोई भी अपील डाली हुई है, वो अपील को कौन डील करेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. सेकंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एसडीओ और कलेक्टर पेंडिंग बिफोर द बोर्ड. कोई भी सेकंड अपील आप डालना चाहते हो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर या अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर, दैट शैल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड. नाउ second appeal against the order of sub divisional officer pending before the collector shall be stand transferred to the commissioner. अब यहाँ पे एक हायरार्की है, जो हायरार्की आपको चैप्टर 3 में समझ में आए, राइट? चैप्टर 3 में हम इसकी हायरार्की को समझेंगे कि किस तरीके से अपील होती है. लेकिन अभी आपको ये मान के चलना है कि किसी भी केस में आप अपील करोगे,
अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, फर्स्ट अपील हो, सेकंड अपील हो, सब कहां पे होगी? बोर्ड में। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। ऑल द केसेस ऑफ रिवीजन, रिव्यू एंड अदर प्रोसीडिंग which is to transfer to the board from the commissioner from 23rd November 2002। पहले ये पावर कमिश्नर के पास थी, अब कमिश्नर के ऊपर एक और पोस्ट आ गई, दैट इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो जितनी भी अपील्स या एप्लीकेशन या रिव्यू पिटीशन या रिवीजन पिटीशन पेंडिंग है बिफोर द ऑफिस ऑफ कमिश्नर, पहले प्रोसीजर क्या था? कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर, अब कलेक्टर, कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो कमिश्नर से सारी प्रोसीडिंग्स कहां पे आ जाएंगी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। ठीक है? पेंडिंग बिफोर द बोर्ड, the party may make an application for the transfer of such cases to commissioner, and if such application is made, the board shall transfer the case to commissioner। और अगर कोई भी एप्लीकेशन अभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है and the person wants that this application should be transferred to the commissioner, then the same can be done by making an application to the board of revenue। Now let's understand the revenue officers, this is very important। ठीक है? एंड इनका कंट्रोल। रेवेन्यू ऑफिसर क्या हो? ठीक है, सबसे पहले जो पोस्ट है सेक्शन 11 के अंदर, ठीक है, ओमिटेड कमिश्नर इंक्लूडिंग एडिशनल कमिश्नर बाय एक्ट नंबर 11 ऑफ 2023, सेटलमेंट कमिश्नर इंक्लूडिंग एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर, ये है इनकी पहली पोस्ट। ठीक है, अब यहां पे आई विल टेल यू, आप एमपी का बेयरेक्ट देखेंगे, दिस इज एमपी का बेयरेक्ट, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स विजिबल टू यू पीपल और नॉट, हैज It टू बी is विजिबल। not visible. ओके, let me see if it can be made visible by some way, there is some glaring effect, the reason whatever, चलिए मैं आपको बता देता हूं। हालांकि सिंपल ये है, एमपी की और यहाँ की हायरार्की में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, एमपी में क्या है? एमपी में टॉप पे है प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर, जबकि इन्होंने क्या किया है? ओमिट कर दिया इसको, कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। ठीक है, इन्होंने बनाया है उसकी जगह पे सेटलमेंट कमिश्नर एंड एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर। ठीक है, कमिश्नर प्लस एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर, इनके नीचे कौन है? कलेक्टर प्लस एडिशनल कलेक्टर, उनके नीचे कौन है? सेटलमेंट ऑफिसर। ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर के नीचे कौन है? एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, उसके नीचे है असिस्टेंट कलेक्टर। अब याद रखिए, आप लोगों ने बीएनएसएस पढ़ा है थोड़ा बहुत? यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अब आपको एक चीज पता होगी, डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, Yes, sir. दोनों और सेम पोस्ट पे होते हैं, और जो असिस्टेंट होता है वो उससे नीचे की पोस्ट पे होता है। राइट, जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो नीचे होता है। सेम हायरार्की यहां पे फॉलो हो रही है, कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर के पास सेम पावर है, लेकिन जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो बहुत नीचे आ, इसके और इनके बीच में सेटलमेंट ऑफिसर आ गया। ठीक है, एसडीओ आ गया, दैट इज सब डिविजनल ऑफिसर, उसके नीचे आया असिस्टेंट कलेक्टर, उसके नीचे आएंगे आपके असिस्टेंट कलेक्टर के नीचे जॉइंट कलेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ में सेक्शन 11 से, रेवेन्यू ऑफिसर्स। कई बार तो वो ऑर्डर में अरेंज करने को तक पूछ लेते हैं। ठीक है, जॉइंट कलेक्टर प्लस डेप्यूटी कलेक्टर्स। ठीक है, उनके नीचे कौन आ गए? डेप्यूटी सेटलमेंट ऑफिसर, देन असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, उसके नीचे है तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार के नीचे है सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, देन नायब तहसीलदार, देन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या है? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ठीक है,
रेवेन्यू ऑफिसर में अगर हम पीक पे देखें तो इन्होंने किसको प्लेस किया हुआ है? सेटलमेंट कमिश्नर, इंक्लूडिंग एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर। उसके नीचे कलेक्टर, कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर, उसके नीचे सेटलमेंट ऑफिसर, उसके नीचे एसडीओ, उसके नीचे असिस्टेंट कलेक्टर, उसके नीचे ज्वाइंट कलेक्टर एंड डेप्यूटी कलेक्टर, उसके नीचे डेप्यूटी सेटलमेंट ऑफिसर, उसके नीचे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, उसके नीचे तहसीलदार, उसके नीचे सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, नायब तहसीलदार, और सबसे नीचे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड। अब यहाँ पे आपको किन किन लोगों के बारे में स्पेसिफिकली ध्यान में रखना, जिनको भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, Almost 12 people are there in the hierarchy. हाँ, यस यस, अगर मैं एडिशनल और उनको काउंट नहीं करूँ तो वो एरोज में 12 लाइंस तो जा ही रही है मिनिमम। राइट राइट राइट। यहां पे आपको मैं मार्क कर दे रहा हूं, सेटलमेंट कमिश्नर इंक्लूडिंग एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर, कलेक्टर, उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, उसके बाद तहसीलदार, उसके बाद नायब तहसीलदार, और लास्ट में ये पांच तो अच्छे से याद रखने, पांच छह तो अच्छे से याद रखने का कोई कोई सॉल्यूशन नहीं। ओके, ठीक है, वैसे तो सारे ही करने हैं। हाँ, बट 12 नहीं, है तो मतलब इन केस कोई स्किप हो जाए तो 5 तो याद पहले नेसेसरी। ये फिर अगर ये ज्यादा याद मैंडेट, हो सके तो 5 से स्टार्ट करके फिर जितने ज्यादा याद हो सके। राइट राइट राइट। नाउ नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर्स, control over revenue officers. All the revenue officers shall be subordinate to state government. All the revenue officers in a division shall be subordinate to commissioner, as added or as inserted by Chhattisgarh Act of 2008. Right? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कमिश्नर की पोस्ट को स्पेसिफाई किया। ठीक है, अब यहां पे देखने वाली बात क्या है कि रेवेन्यू ऑफिसर था पहले कमिश्नर, पहले कमिश्नर कौन था? रेवेन्यू ऑफिसर। अब रेवेन्यू ऑफिसर नहीं, रेवेन्यू ऑफिसर को कंट्रोल करने वाला इंसान है कमिश्नर। अंडरस्टैंडिंग इट? आर यू एबल टू डिफरेंशिएट? रेवेन्यू ऑफिसर को यहां से हटा के, सेक्शन 11 में से हटा के 12 में डालने का पर्पस क्या? पहले वो रेवेन्यू ऑफिसर की कैटेगरी में फॉल कर रहा था। कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है, which of the following is not a revenue officer? So you have to remember that commissioner is not a revenue officer. ठीक है, all the revenue officers in a division are subordinate to commissioner. Understanding it? What I'm trying to convey? Is it Yes, clear? sir. Yes or no? Now, unless the state government otherwise direct, all revenue officers in a district shall be subordinate to collect. Definitely this is quite clear. इसमें कुछ याद करने जैसा भी नहीं, आपको याद रहिएगा कि किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर है वो कौन होगा? ऑब्वियसली दैट इज कलेक्टर। राइट? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Heading towards section 13, that is power to alter, create, abolish division, district, subdivision and तहसील। डेफिनेटली ये पावर किसके पास है? स्टेट के पास। स्टेट को अगर लगता है किसी तहसील का साइज बड़ा है तो उसको डिवाइड करके दो तहसील बना देगी, दो छोटी छोटी तहसीलें हैं तो उनको सबमर्ज करके एक सिंगल तहसील बना देगी। ठीक है, सेम गोज विद डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन, एवरीथिंग इज सेम, राइट? The state government may create divisions comprising of such district as it deems fit, may abolish or after limits of such division. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? डिविजन्स बना सकती है, ठीक है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है। देखो, टेल मी, ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग बैक, ये बता दो मुझे बस। यस, सॉरी इज सर, देयर एनीवन? Yes, ऑल ऑफ यू आर हिंदी स्पीकिंग पर्सन, हिंदी समझ आती है? हाँ, बेसिक yes, समझ sir. आती है। अगर बहुत ज्यादा मतलब लॉ की भाषा हो तो हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ पड़े। ठीक है, ठीक।
इसको याद करने का सिंपल तरीका बता। राज्य, राज्य के नीचे आता है संभाग। ठीक है, अब ये संभाग एमपी और छत्तीसगढ़ में संभाग बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज बोलते हैं। उसके नीचे आता है जिला, जिला के नीचे आती है तहसील, तहसील के नीचे आते हैं गांव। ठीक है, कुछ गांव मिलके बनाते हैं तहसील, तहसील मिलके बनाते हैं जिला, जिला मिलके बनाते हैं संभाग, संभाग मिलके बनाते हैं राज्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरा गांव है कैथौरा। ठीक है, ये जो कैथौरा गांव है ये आता है भांडेर तहसील। अब इसके अलावा, कैथौरा के अलावा लगभग 70 और विलेजेस हैं जो भांडेर तहसील में आते हैं। ठीक है, अब भांडेर, अब जो भांडेर तहसील है वो आती है दतिया जिले में। दतिया जिले में 4 तहसीलें आती हैं, भांडेर, दतिया, इंदरगढ़, सेवड़ा, ये 4 तहसील। अब दतिया प्लस 8 और जो डिस्ट्रिक्ट है वो मिलके बनाते हैं डिवीजन या संभाग, जिसको हम बोलते हैं ग्वालियर, जो हमारा ग्वालियर संभाग। और ऐसे ही 10 संभाग या 10 डिवीजन मिलके बनाते हैं राज्य, दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश। क्या ये हायरार्की आपको समझ आ गई बेसिक? सर डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब जिला, जिला जिला, बोलते हैं ना, और जिला, डिवीजन है संभाग। डिवीजन है संभाग, ओके सर, समझ में आ गया। राइट। यस सर। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है, 2 या 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 10 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के, ठीक है, एक डिवीजन को बना सकती है। या जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले क्या था, पहले जबलपुर डिवीजन में लगभग 20 जिले आते थे। फिर बाद में एक नर्मदापुरम और एक जबलपुर, 2 अलग अलग डिवीजन बने। एक में 10 जिले आ गए और एक में 10 जिले आ गए, एक में 10 डिस्ट्रिक्ट आ गए, एक में 10 डिस्ट्रिक्ट आ गए, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑल्टरेशन कर सकती है, या चाहे तो अबॉलिश कर सकती है किसी भी डिवीजन को, या नए डिवीजन को क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट, the state government may, after the limits of any district or tehsil, may create new or abolish existing district or tehsil, and may divide any district into subdivisions, and may, after the limits of or abolish any division। आगे जो चीज स्टेट गवर्नमेंट डिविजन्स के साथ कर सकती है वो डिस्ट्रिक्ट के साथ भी कर सकती है, वही चीज वो तहसील्स के साथ भी कर सकती है, ऑल्टरेशन कर सकती है, किसी तहसील को हटा दिया, किसी नई जगह को तहसील बना दिया। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, ये अबॉलिश वर्ड लिखा जरूर है, प्रैक्टिकली अबॉलिश होती नहीं है। कोई एक तहसील बन गई तो बन गई, अबॉलिश बहुत कम केसेस में होती है। 99% नई तहसील ऐड होती जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है एरिया की, तो नए नए तहसील या नए नए डिस्ट्रिक्ट या नए नए डिविजन ऐड होते जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो है क्या, द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन और ऑन एनी प्रपोजल टू आफ्टर द लिमिट्स ऑफ एनी डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट और तहसील, और टू क्रिएट new or abolish existing division, district or tehsil, shall publish in a prescribed form such proposal for inviting objection, and shall take into consideration any objection to such proposal। तो जब भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुरिस्डिक्शन को चेंज करने के लिए नए जगह पे नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो रहा है या किसी डिस्ट्रिक्ट को अबॉलिश किया जा रहा है, तो अब वहां केवल आप डिस्ट्रिक्ट को अबॉलिश नहीं कर रहे हो, ये चीज समझो। आप वहां केवल डिस्ट्रिक्ट को अबॉलिश नहीं कर रहे हो, आप किसको अबॉलिश कर रहे हो, आपने अबॉलिश कर दी ये पूरी लाइन। वहां का कलेक्टर गया, एडिशनल कलेक्टर गया, एसडीओ गया, असिस्टेंट कलेक्टर गया, ज्वाइंट कलेक्टर गया, डेप्यूटी कलेक्टर गया। ठीक है, जो सेटलमेंट ऑफिसर है ये वाली हायरार्की अभी बचता है, राइट। या मान लो उन्होंने कोई तहसील हटा दी, तो वहां से तहसीलदार गया, एडिशनल तहसीलदार गया, नायब तहसीलदार गया, अंडरस्टैंडिंग इट। सो
ये केवल जगह का ऑल्टरेशन नहीं होता है, ये पोस्ट का भी ऑल्टरेशन कर देता है। तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो दैट पर्सन कैन रेज द ऑब्जेक्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट, और जब भी गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को, तहसील को ऑल्टर करेगी तो उन जो ऑब्जेक्शंस आए हैं उनको भी ड्यूली कंसिडरेशन में रखेगी। Subject to such orders of the state government under subsection 2, every tehsil shall be deemed to be subdivision of the district. हर एक जो तहसील है उसको हम क्या बोलेंगे? सब डिवीजन। सिंपल भाषा में जो हमारी हायरार्की थी ना, डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या आ जाएगा? सब डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट के नीचे, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिवीजन है जिसको हम संभाग बोल रहे हैं, बीच में डिस्ट्रिक्ट है, उसके नीचे सब डिवीजन है जिसको हम तहसील बोल रहे हैं, ठीक है ना। और उसके नीचे फिर विलेज तो है ना। रूल्स 1, एनी प्रपोजल टू after the limits of any division or district or tehsil to create or abolish a new abolish an existing division or district or tehsil shall be published in the following form। ठीक है, कहां कहां पे पब्लिश किए जाएंगे? Notice in pursuance of the provision contained in the provision of subsection 2 of section 13 of Chhattisgarh Land Control Act, the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959. Notice is hereby given that in exercise of the power conferred under subsection 1 and subsection 2 of the said act, the state government proposed to, after the limit of the division district tehsil, to create a new division district tehsil or abolish existing division district tehsil, or to define the limits thereof specified in the schedule below. So here what they will do, they will notify before doing any kind of alteration, addition, abolition of new district, division, subdivision, they have to notify, ठीक है। The proposal will be taken into consideration on the expiry of 60 days from the date of publication of notice in the Chhattisgarh Gazette, and any objection or suggestion in respect thereof shall be forwarded in writing to the Secretary of the Government to the Chhattisgarh Revenue Department before the expiry of said period। मतलब कि अगर आप ये ऑल्टरेशन कर रहे हो तो आप पब्लिकेशन करोगे, पब्लिकेशन के 60 डेज के अंदर अंदर जितने भी ऑब्जेक्शन आएंगे या सजेशन आएंगे, उन ऑब्जेक्शन और सजेशंस को आप किसे भेजोगे? सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड दे शैल लुक इनटू दोस सजेशन, ठीक है, और दोस ऑब्जेक्शन, राइट। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. नाउ डेफिनेटली यहां पे एक शेड्यूल है, ठीक है, जिसमें वो ये बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाउ आई हैव टू ओपन मैप to elaborate to you people. Now, you people can see this map. Yes, sir. Yes, sir. Now, as you can see, these are the districts: Kabirdham, Pametera, Durg, Ranjantgaon, Balod, Mahola, Manpur, ये, और खैरगंज, सुखगंज, गंदई, ये सब मिलके एक डिवीजन है। कौन सा? खैरगंज, सुखगंज, गंदई, राइट। अब आपको जैसे मान लीजिए कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट का एरिया इतना बढ़ाना है, ठीक है, ये वाला एरिया भी कबीरधाम में ले जाना है, मुंगेली डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैप में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा कि अब कबीरधाम में, कबीरधाम विलेज में हमने ये नया एरिया ऐड ऑन कर दी, ठीक है। अब ये नया एरिया केवल कबीरधाम में ऐड नहीं हुआ, इससे इसका जो पहले जो केस मुंगेली का कलेक्टर देख रहा था वो अब कौन देखेगा? कबीरधाम का कलेक्टर,
पहले जो इनका डिवीजन था वो क्या कौन सा था? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, अब वो कौन सा बन गया? खैरगर, छुकादान, गांधी। इज इट क्लियर? एबल टू लास्ट अंडरस्टैंड? में आपने जो Yes, sir. बोला समझ नहीं आया कि वो गोरेला जो है वो खैरगढ़ कैसे बना। ऐसे बन गया क्योंकि अब ये एरिया मुंगेली का है ही नहीं, ये एरिया कट के मुंगेली से चला गया कबीरधाम में, और कबीरधाम किस में है? खैरगर, छुकादान, गांधी में। एबल टू अंडरस्टैंड? सर ये जो नाम लिखा है जैसे गोरेला पेंद्रा मारवाही लिखा है, हम्म तो हम्म। ये नाम जो है वो डिवीजन का है कि डिस्ट्रिक्ट का है? एक चीज याद रखो, ग्वालियर अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट भी है और डिवीजन भी। हाँ। भोपाल डिस्ट्रिक्ट भी है और डिवीजन भी है। राइट। राइट, इन द हाँ। सेम वे ये सारी डिस्ट्रिक्ट जितनी भी ग्रीन कलर में है इन सब का डिवीजन है औरेला, पेंड्रा, मारवाही। ओके। तो वो ओके। अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट भी है, बट एट द सेम टाइम इट इज द डिवीजन आल्सो ऑफ 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके। राइट, अब मुंगेली का कुछ एरिया कट के कबीरधाम में चला। कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर है? खैरगढ़ के। राइट, तो ऑब्वियसली अब जो जुरिस्डिक्शन है वो किसका लगेगा? खैरगढ़, रादर देन गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। इज इट यस क्लियर सर। नाउ? यस। परफेक्ट। तो अब यहां पे ना उन्हें मेजरमेंट देना होता है, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, उन्हें मेजरमेंट देना होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मैप यहां पे वो ड्रॉ करेंगे कि भाई ये एरिया कटा है नॉर्थ से और ये इसमें गया है, या ये वाला एरिया कटा है ये यहां गया है। अंडरस्टैंडिंग इट? यस। दे हैव टू नोटिफाई इट इन द मैप। Yes, sir. ये सब बिकॉज वो रायगढ़ वाला वो वाला एरिया वो ईस्ट वन पार्ट में चला जाता है और वो राइट दूसरे राइट पार्ट में आता है। राइट, क्लियर? यस। Shall we start with the MCQs for the day? Yes, यस। sir. Just okay. Just a second. I'll just open up that. Yeah, first question. How many members are there? Okay, now it is. Okay. Yes. No, sir, it was not visible. The MCQs. Now it is visible. Okay. How many members are there? Okay. On the board of B. revenue for Chhattisgarh. What is the correct answer? Option B. B, Bangalore. Bangalore. No Yes, that's fixed correct number. answer. There is Yep. president, but there is no number of fixed members. Right, right. So its answer should be B. Where is the principal seat of the Board of Revenue of Chhattisgarh? C. C. Correct. But remember one thing, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में प्रिंसिपल सीट रायपुर में बैठेगी, याद रखना, कंफ्यूज मत Yes, हो। sir. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, can the board of revenue hold sitting at the place other than its principal seat? Question number 3.
What is the correct answer? Option B. Option B, Bangalore is the correct answer. Yes. The अभी हमने डिस्कस किया था ना, the president with the approval of state government can sit at any other place for the convenience of parties. Now, question number 4. What happens when a member of board is unable to perform their duty? If they are unable to perform their duty, what shall happen? क्या हुआ भाई, आज लॉस्ट लग रहा हो आपको? Option B. Option B, the state government appoints a temporary replacement. Question number 5. What is the qualification for becoming a member of Board of Revenue? Option B, Bangalore. Option B, Option B. Bangalore. Very. Question number 6. How are the salaries and allowances of board members are funded? From the state contingency fund, consolidated fund, separate fund created for the board, directly from state's Option revenue collection. A. Option B. It's option B, not A. Okay. Not contingency fund. Contingency funds are Fund of the state is utilize. consolidated, not contingency. Yes, it's consolidated, Okay. not contingency. Contingency funds are used in case of any natural Emergency. calamity or something. Okay, right. Emergency sort of, right? By consolidated funds से तो सबकी salaries जाती. Right. What is the primary function of Board of Revenue? To collect land revenue, to exercise power and functions conferred by the court and other specified functions, to act as an advisory to the state government on revenue matter, to adjudicate land dispute. B. Yes, Option B is the correct answer. Yes, both of you are correct. What is the board's power of superintendence? What is the board's power of superintendence? Remember it? अभी हमने डिस्कस किया था. Superintendence over all matters. Okay, B, Subject Bangalore. to Yes, sir. its appellate or revisional jurisdiction. Yes, B, Bangalore. How are the powers and functions of the board exercised? Yes. So option B. Option B. By benches constituted by one or more members. Yes, correct. Question number 10. What happened to the cases pending before the Board of Revenue on Chhattisgarh 31st, 2022? I have told you reciprocating effect hai. C. Option Yes, C. C is the yes. Question number 11. First appeal against the order of the collector pending before the court. A. What happened? Yes. Question number 11. Its answer is option A. एक बार फिर से देख लो. They were transferred to commissioner. कंफ्यूज क्यों हो गए हो? कलेक्टर के अगेंस्ट जो है वो कहां जाएंगी? कमिश्नर के पास. कमिश्नर